बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग हाउ आर यू माय फैमिली पीपल टुडे वी लर्न how to authenticate different users in an Oracle Apex 20.1 and this is thought number 6 and application is Apex 20.1 आज हम ये सीखेंगे कि यूज़र को किस तरह से ऑथेंटिकेट किया जाता है किस तरह से उसको डिफरेंट मुख्तलिफ फॉर्म्स असाइन किए जाते हैं कि उमर है या उस्मान है तो वो सेटअप ट्रांजैक्शन फॉर्म देख सकता है अली जो है वो सेटअप फॉर्म देख सकता है उमर जो है वो सेटअप और ट्रांजैक्शन दोनों देख सकता है तो इस तरह की चीज़ हम सीखेंगे वी हैव थ्री यूजर्स उमर उस्मान एंड अली and we learn how to assign different forms to these user. Let's suppose assign transaction form to Usman, not for Ali. Assign setup forms for Ali, not for Usman. So yeah, like that. So we start it. First we start it. We have application Apex 20.1. Click on shared components. Shared component पे क्लिक करें click on navigation menu अंडर नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करें जो कि नेविगेशन के अंडर में आता है हिट डेस्कटॉप नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक कीजिए now this is a setup page I do not want the setup page to Usman मैं नहीं चाहता कि सेटअप पेजेस उस्मान के पास हो so what should I do अब मैं क्या करूँगा क्लिक on setup page come to conditions area कंडीशन के टैब में आ जाए
SQL एक्सप्रेशन सेलेक्ट करें कंडीशन टाइप के ड्रॉप डाउन में से kindly select SQL expression from condition type drop down. Now assign expression to expression 1 area. अब ये एक्सप्रेशन आप असाइन कर दीजिए एक्सप्रेशन 1 वाली जगह पे और एंड चेंज द नेम उस्मान और उस्मान का नाम लिख दीजिए यहाँ पे I want that first you look at the forms which are assigned to Usman and then we will see the changes. Setup page are available, transaction pages are available and these 3 options also available. पहले मैं ये चाहता था कि आप लोग देख लें कि उस्मान के पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं सेटअप पेज भी मौजूद है उसके पास ट्रांजैक्शन पेज का एक्सेस भी मौजूद है और इन के एक्सेस भी मौजूद है तो अब हमने कुछ चेंजेस किए तो अब हम देखते हैं उसका क्या असर पड़ता है इसके ऊपर तो अब आप देखें कि सेटअप पेज उस्मान के पास से चले गए नाउ यू कैन सी दैट द सेटअप पेज navigation menu disappear from Osman Baig user. However, hide this setup from dashboard as well. No, don't hide it. Don't hide it. Don't hide it. Now we move to the next step. अब हम दूसरे steps की तरफ जाते हैं. ठीक है. ठीक है. Repeat same process for Ali. But for Ali, we have to hide transaction page. अली को हम चाहेंगे कि ट्रांजैक्शन पेज का मेन्यू ना नज़र आए तो हम क्या करेंगे ट्रांजैक्शन पेज पे जाएंगे we move to the transaction page conditions SQL expression Ali you see setup pages are available, transaction pages are available and these 3 also available. Now hit the apply changes button and see the changes. You see now only setup pages are available for him. You see this is how we change it. Sorry. Now the remaining part will cover for the next video. Thank you very much. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.